Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. Continuing with our Indian Economic Development series, we are covering chapter number 6, Rural Development. And in this particular video, we'll talk about diversification into productive activities. We have already done 3 videos. If you haven't looked at them, please do so that you get a better understanding of what we're going to be talking in this lecture. So, diversification in productive activities. India is an agricultural country. India lives in rural area. More than two-thirds of India's population depends on agriculture. That is yet to become productive enough to provide for them. One-fourth of rural India still lives in abject poverty. भाई इंडिया रूरल एरिया में है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद दे आर नॉट प्रोडक्टिव एनफ टू प्रोवाइड फॉर देमसेल्फ. और 1/4 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एब्जेक्ट पॉवर्टी, 2 वक्त का खाना नहीं है उनको प्रॉपरली. उससे भी बड़ी बात, इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन पिछले 50 सालों में डबल से ज़्यादा कर ली है. क्या हम अपना लैंड बढ़ा पाए हैं? नहीं. इसका मतलब ये हुआ that there is too much pressure on the land. Too much population is depending on too little a land. So now what to do? The only way out is you diversify. Along with agricultural activity, we have to look for other venues where we can generate employment. How things can change. Diversification includes 2 aspects. One relates to change in cropping pattern and other relates to a shift of workforce from agriculture to other allied activities. एक आप अपना क्रॉपिंग पैटर्न ही चेंज कर दो. सिर्फ आप एक तरीके की क्रॉपिंग नहीं करो, आप मिक्स्ड क्रॉपिंग लो, आप रोटेशनल क्रॉपिंग लो, आप एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक मिक्स करो. But something you will have to change in your cropping pattern to have this population getting supported. और दूसरी बात, आप नॉन फार्म एक्टिविटीज, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एलाइड एक्टिविटीज को encourage करो, जैसे लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशेज, and then you can also encourage your pottery, handicrafts, because this kind of big population cannot just depend on agriculture. There is too much risk involved. Need for diversification arises from the fact that there is greater risk in depending exclusively on farming for livelihood. So, diversification towards new areas is necessary not only to reduce the risk from agriculture sector, but also to provide productive, sustainable livelihood options to rural people. हमें ये जो रिस्क है सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड करके उसको खत्म करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, और वो है कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर पे ना डिपेंड करके दूसरी भी वेन्यूज ढूंढिए. Much of the agriculture employment activities are concentrated in Kharif season. अब पहले ही लैंड थोड़ा है, उसके ऊपर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, फिर जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है वो इस तरीके का है दैट वी हैव 2 सीजन्स, खारिफ एंड रबी सीजन. खारिफ सीजन में दैट सोइंग इज एट द बिगनिंग ऑफ द रेन, तो यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज इंडिया डजंट हैव टू मच इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर. तो इरिगेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा हमारे यहाँ नहीं है. तो भाई जब इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह नहीं है तो इसका मतलब वी आर डिपेंडिंग सोनली ऑन द नेचर. तो खारिफ क्रॉप रेनी सीजन से पहले लग जाता है तो यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती है. बट द अदर सीजन इज राबी सीजन विच इज आफ्टर मानसून. Now the problem starts here that in this season there is no irrigation facility, inadequate irrigation facility. तो ये जो सीजन है ये नहीं सपोर्ट कर पाता एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के टर्म्स में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को. तो भाई इस पर्टिकुलर सीजन में वी नीड टू फाइंड alternate methods of gainful employment. Expansion into other sectors is essential to provide supplementary gainful employment, and in realizing higher level of income,
for rural people to overcome poverty and other tribulations. तो अब एक ही तरीका रह गया है गरीबी से मुक्त करने का, and that is that you support the population not to just depend on agriculture but to diversify. Government should make effort to develop such gainful employment in Rabi season so that people are employed and they are able to overcome the poverty. So conclusion क्या निकला भाई? There is need to focus on allied activities definitely, non-farm employment and other emerging alternatives of livelihood. Though there are many other options available for providing sustainable livelihood in rural areas, agriculture is already overcrowded. A major portion of increasing labor force need to find alternate employment opportunities in other non-farm sectors. और जो नॉन फार्म सेक्टर्स हैं उसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हम ढूंढ सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही डायनेमिक हैं, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ते हैं और बड़ी हेल्दी ग्रोथ दिखा रहे हैं। और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं नॉन फार्म सेक्टर्स में, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, तो उनके यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है उन सेक्टर्स में बहुत लो है। तो भाई जो डायनेमिक सेक्टर्स हैं वो इंक्लूड हो गया एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, जिस तरीके से आप ये देखिए सॉस बनाना, चिप्स बनाना या जैम्स बनाने, ये सब डायनेमिक हैं, इसके अंदर बड़ी तेजी से ग्रोथ हुई है। लेदर इंडस्ट्री, tourism, but then there are other sectors which are very much in rural area, but because of lack of proper infrastructure and help, they have not developed. These sectors which have potential but seriously lack infrastructure and other support include traditional home-based industries like pottery, crafts, handlooms, etc. अब अगर आप देखें नॉन फार्म जो जॉब्स हैं वो ज़्यादातर मेन डोमिनेटेड है, यानी कि जो विमेन हैं दे आर यूजुअली एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर while men they try to find jobs in non-farm employment sector. But over the years what's happened, because of electricity reaching villages, because of this Ujjwala Yojana in which the women are getting gas connections, women also have started looking for non-farm jobs because now they have the time to spare, and non-farm jobs are a good support of income to any family in rural area. So it's time to think that times are changing. जो कभी men dominated हुआ करता था non-farm jobs, आज because of various government policies the women are also giving a good competition in such jobs. And this is a good sign, healthy sign, because that's the only way that the rural India can develop and come out of the poverty. So think about it. Listen to the video twice, thrice. Like and subscribe the video so that you continuously get the notification of my new videos.